So the next topic in digital image processing is the edge linking and the boundary detection in the segmentation module. So let's start with the definition. So edge linking and the boundary detection means we have any given image and we have to uh, link the edges of that image. So ideally the edge detection technique yield the pixel lying only on the boundaries between the region, and in practice this pixel set seldom characteristics a boundary completely because of the noise, breaks in the boundary due to the non-uniform illumination, and the other effect that may introduce the spurious discontinuity. सो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास कोई इमेज है, उसके एजेस को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, बट वो एजेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रही. सो वो क्यों नहीं हो पा रही? ड्यू टू सम नॉइज, ब्रेक्स इन द बाउंड्री ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन एंड द अदर इफेक्ट्स. सो दस द एज डिटेक्शन एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं that are usually followed by linking and the other boundary detection procedures designing to sample the edge pixels into a meaningful boundary. So we have edge linking. First one is local processing. सो लोकल प्रोसेसिंग है तो ग्लोबल प्रोसेसिंग है, तो दो हम प्रोसेसिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं एज लिंकिंग के लिए. तो लोकल प्रोसेसिंग में बेसिक आइडिया क्या है कि हम एनालाइज करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिक्सल in a small neighborhood. For example, we have the image 3x3, 5x5 for every point x comma y that has undergone the edge detection. So we can say that all the points that are similar are linked, form the boundary of the pixel that share some common properties. So two principal properties for establishing the similarity are strength of the response of the gradient operator used to produce the edge pixel, and second is the direction of the gradient. So the gradient of x comma y is calculated by the direction is represented by alpha x comma y is equal to tan inverse gy divided by gx. G is the gradient. So we can say that an edge pixel at x dash comma y dash in the neighborhood centered at x comma y is similar in magnitude to the pixel at x comma y if the derivative of f x comma y minus derivative of f x dash comma y dash is less than equal to the threshold value. So where t is the predetermined threshold value. So an edge pixel at x dash comma y dash in the neighborhood centered at x comma y is similar in angle to the pixel. फर्स्ट क्या था? मैग्नीट्यूड की बात की थी, सेकंड पॉइंट में एंगल की बात की है. That is alpha x comma y minus alpha x dash comma y dash is less than equal to a. A क्या है हमारे पास? Predetermined angle threshold. So point in the neighborhood of x comma y is linked to x comma y if both the magnitude and the angle criteria are satisfied. Clear? यहाँ पर दोनों चीज़ें magnitude and angle को लेके चलना है. Then we have the global processing. जो प्रीवियस हमने पढ़ा वो था हमारा लोकल प्रोसेसिंग. तो लोकल प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास है ग्लोबल प्रोसेसिंग. ग्लोबल प्रोसेसिंग में हम हफ ट्रांसफॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं. तो हफ ट्रांसफॉर्म इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मैनी टाइम पेपर्स में आ जाता है. सो नाउ कंसिडर द ग्लोबल रिलेशनशिप बिटवीन द पिक्सल. सपोज दैट for n points in an image we want to find all the subset of these points that lie on a straight line. So हफ ट्रांसफॉर्म को हम अगर डेफिनेशन देखें तो हफ ट्रांसफॉर्म क्या है? इट इज़ अ फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर डिटेक्टिंग द सिंपल शेप्स सच एज सर्कल्स, लाइन्स एक्सेट्रा इन एन इमेज. सो we can say that the Huff transform takes the image created by the edge detection operator, but most of the time edge map is disconnected. Therefore the Huff transform is used to connect the disjoint edge point. So if we have taken the example of disjoint, mean that we have this triangle and the edges are disconnected. For example, there is an image of flower and this
here we apply the Huff transform, and we can say that if we are detecting the edges of this flower shaped image, some of the edges are disconnected. So to connect these image, the Huff transform is to be used. So we use the equation of the line, that is y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is the intercept of the line. So the problem is that if we have the infinite lines can be drawn connecting these points. So we have the number of pixel values. यहाँ पर एक लाइन इसमें से क्रॉस कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही पिक्सल उस लाइन पे आए जो हमें चाहिए, तो मल्टीपल लाइंस भी हो सकती है, मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं उस पर. सो इस केस में क्या है कि हमारे पास, हम अगर माने x1 एंड y1 क्या है, ए पॉइंट है, एक पिक्सल है, दूसरा क्या है x2 एंड y2. सो सेंटर क्या है xi कॉमा yi. सो वी हैव टू अप्लाई this on the image space, and we have to convert this image space into the parameter space, that is CM plane में convert करना है. क्लियर? CM plane मतलब क्या है कि जो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन प्लेन है, ठीक है. तो उसे हमने XY प्लेन से इमेज स्पेस से पैरामीटर स्पेस में बदला, डेट इज CM, बाय कैलकुलेटिंग द C वैल्यू एंड YI. पॉइंट अगर XI कॉमा YI है, मैनी पॉइंट्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर एन एज पॉइंट इन द XY प्लेन इज ट्रांसफर टू द CM प्लेन. सो YI इज इक्वल टू MXI प्लस C वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसी इक्वेशन से, स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन से, डेट इज माइनस XI M प्लस YI. सो द CM प्लेन इज लाइक दिस, कि हम इसको अगर वैल्यूज़ एक्स और वाई की रैंडमली पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एक सेंटर पॉइंट आएगा जिसमें से सारी लाइंस जो है वो क्रॉस होके जा रही है. सो दिस पैरामीटर स्पेस इज कॉल्ड द हफ स्पेस. सो if A and B are the 2 points connecting by a line in the spatial domain, they will be intersecting the lines in the half space. So this is a XY plane and this is the CM plane. So intersecting point जो है वो same है. This represent the half transform space. So the algorithm is we have to load the image, then determine the image edges using the any edge detector. Quantize the parameter space P. Repeat the process for all the pixels of the image. If the pixel is an pixel, edge pixel, then C is equal to minus XM plus Y. and PC को M plane पे क्या है, PCM plus 1. Show the half space, find the local maxima in the parameter space and draw the line using the local maxima. So इसमें क्या लिमिटेशन है इस एल्गोरिथम में, is it does not work for the vertical line because they have infinity slope. So therefore the line must be converted into the polar coordinate. So उसे polar coordinate में जब हमने convert किया, then equation of line in the polar is phi is equal to x cos theta plus y sin theta, where theta is equal to the angle between the line and phi is equal to the diameter. So there is the image space which I have to convert into the half space, that is phi थीटा प्लेन में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने वहाँ पर एक्स वाई प्लेन को सी एम प्लेन में कन्वर्ट किया था. सेम इसी इक्वेशन से हम यहाँ पर पोलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फाई थीटा में कन्वर्ट किया. सो लोड द इमेज, डिटर्मिन द इमेज एजेस यूजिंग एनी एज डिटेक्टर, क्वांटाइज द पैरामीटर स्पेस P. Repeat the process for all the pixels of the image. If the pixel is an edge pixel, then for all theta, calculate Q for the pixel x comma y and theta. Increment the position of diameter comma theta angle in accumulator array. Show the half space, find the local maxima in the parameter space and draw the line using the local maxima. So now we have the accumulator cells which are sometimes used in the half transform, which is the meaning of that if we want to subdivide the parameter space into the accumulator cells, that is A min A max and B min B max are expected ranges of the slopes and the intercepted values.
So the cells at the coordinate I comma j with cell values accumulator I comma j corresponding to the square associated with the parameter space coordinate ai comma bi. The collection of the accumulator cells is commonly called the Huff matrix or the Huff array and are computed as set of all the cells to 0 for every point xk comma yk in the image plane. Let equal each of the allowed subdivision values on the a-axis and solve for b using b is equal to minus xk a plus yk. So the resulting b's are rounded off or to the nearest allowed value in the b-axis. If a choice of ap results in the solution bq, will let ap comma q is equal to ap comma q plus 1. At the end of the procedure, a value of m in a of I comma j corresponding to the m points in the xy plane lying on the line y equals to aix plus bj. So we can say that the accuracy of the collinearity of these points is determined by the number of subdivisions in the AB plane. So this is all about the Huff transform. In exam, you need not to, if you don't want to read the accumulator cell, then ignore it. Up to this algorithm, you have to write if the question arises about the Huff transform or the global processing, edge linking and detection. So they are the two processing technique, local and the global. ग्लोबल में हमने हफ ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन करना है.